So in this session, I will be talking about linear combination of vectors. I will talk about linear span. I'll talk about linear independent dependence. Okay, depending upon you know. So what is the meaning of linear combination? It is very important concept. So I'm just going to repeat the concept. Okay, suppose you have got bunch of vector. अगर आपके पास 10 वेक्टर हैं, if you have vector like v1, v2, v3, v4, v5, right? In very easy language, I'm telling you, right? Suppose you have got many vectors, right? You can say you have v1, v2, v3, and so on, vn vector, right? These are the vectors you have, and these vectors belong to a vector space V. You can say any vector space is there. Okay, you can say n dimensional vector space is there and n number of vectors are there. ठीक है, or there exists a scalar constant. You can say lambda 1, lambda 2, and so on, right? Lambda n, right? So these are the scalar constant. They belong to the real R. Okay, all guys are real, you can say. ठीक है, if all guys are real, so what you can do here is you can always take the linear combination of them, right? So you can write, you can get new vector v, in fact, right? You can say that a new vector v that we can write as a linear combination of these vectors. You can say lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3, right? Plus and so on, plus lambda n vn, right? Okay, so this v should belong to, okay, the new vector what you are getting, this v should belong to a vector space v also. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए, समझ आए क्या? दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो v1, v2, v3 डॉट 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 vn. ओके, अगर ये वेक्टर बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस v से और आपके पास lambda 1, lambda 2 they exist also, they should exist. अगर lambda 1, lambda 2 dot dot lambda n they do not exist, then you cannot determine the linear combination of vectors. Okay, remember, if there exists lambda 1, lambda 2, lambda n, okay, so आप याद रखना कि what you are doing here is you are simply multiplying by scalar constant with the vector, है ना? आप मल्टीप्लाई कर रहे हो and then you are summing them, right? So any subject you see, right, wherever you will find this kind of things, right, they constant times any vector, okay, any function you can say, and you are summing them, so that is called the linear combination. So you can write this as summation, right? Summation. Okay, this is nothing but lambda I, vi, and I going from 1 to n, you can say, right? So this is nothing but the linear combination of vectors. Okay, or you can say simply calling column vectors, right? क्योंकि हम v1, v2, v3 को column vector लेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर जो भी वेक्टर्स आएंगे they are all column vectors, right? So ax equal to b, right? ax equal to b. So if you are able to write b as a linear combination of column vector of a, it means what? आप क्या बोलोगे अगर आप b को as a linear combination of column vector लिख पाते हो? It means what? The meaning here is you are able to get the solution. Okay, there will be some solution. Okay, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है. इसको अगर आप लिखोगे an expression of the type, okay, lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3 dot dot lambda n vn, okay, where lambda I is basically what? Where lambda I belongs to R and these v1, v2, v3 belong to v. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं is said to be linear combination of vectors. Linear combination of vectors. And one example I showed you, right? One example I showed you. I think एक एग्जाम्पल हम लोग फिर से देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? मान लो कोई वेक्टर x दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3, और यू कैन से 1 3 4, राइट? और कोई और वेक्टर्स दिए हुए हैं, e1 is 1 0 0, e2 is given as 0 1 0, right? And e3 is given as 0 0 1, right? ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, ठीक है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस. व्हाट वी कॉल इट? स्टैंडर्ड बेसिस, राइट? वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस. इसका स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है ये आपको पता चलेगा, राइट? फाइन. सो e1 e2 e3
E1 is 1 0 0, E2 is 0 1 0, E3 is 0 0 1, right? So you can write always as a x as linear combination of E1 E2 E3. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. अगर आप बोलोगे this is a vector x which is 1 3 4, right? Okay, so you can say that 1 times E1, right? 1 0 0 plus 3 times 0 1 0, right? Plus 4 times 0 0 1, right? So this is nothing but what you are able to write. X can be written as linear combination of, okay, linear combination of E1 E2 and E3. आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, you can see always, right? So what is this? आप देखो यहाँ 1, you have to get 1 in the left hand side. So 1 times 1, right? That is 1, and 3 times 0, 4 times 0, right? So you will get 1 only. 3 you have to get, right? So 1 times 0, 3 times 1, 4 times 0, right? So आप देख लो यहाँ पर कि जो कांस्टेंट है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, उनकी क्या वैल्यूज हम ले रहे हैं, दैट इज 1 3 4, ठीक है. So x can be written as the linear combination of E1 E2 E3, and these are the standard basis vectors, you can say 1 0 0. Okay, in the vector you see 3 components are there, right? So all other components are 0. The first component is unity, right? In the second vector, second component is non-zero, all guys are 0, right? And that too unity. So we call it standard basis vector. इनको क्या बोलते हैं? Standard basis vector. Fine. So let us talk about systematic way, systematic approach, right? In fact, because I always believe on systematic approach. Your gate exam hai, right? So you don't have that much time to prove everything. You should know the systematic approach, right? To investigate whether you can write any vector as a, whether you can express, okay, whether you can express any vector as linear combination of column vectors or not, right? Fine. So systematic, okay, systematic, you can say V. So what is the first step that you have to do? Write given vector in terms of, write given vector, okay, in terms of what? Lambda 1 V1, lambda 2 V2, okay, and so on, lambda and Vn. सबसे पहले आपको क्या करना है, whatever vectors are given, first write them as a linear combination of vectors. What is the meaning of this? Lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus dot 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 lambda and Vn. इसका मतलब क्या होता है? It is just a linear combination of vectors. जो भी vectors given रहेंगे, जैसे E1 E2 E3 given था, तो उसको आप पहले लिखोगे क्या? Lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus dot dot lambda and En. अब देखो यार, combination of column vector, linear combination, बार बार I'm talking, right? So you have to understand, it has some importance in your life, okay? It will impact your life, okay? अभी मैं ज्यादा मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, okay? Because I am also focusing on computer science, mathematics, right? But yeah, at the end of the day, I will be focusing. Last May, when I will give you the entire glimpse of linear algebra, one session I will conduct. So that will be purely on ML or AI, right? Based machine mathematics. So write given vector in terms of lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 dot 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 lambda and vn. सबसे पहला स्टेप यही रहेगा. सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका? ओके, एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, express in terms of non-homogeneous system of linear equations. Okay,
अब आपके पास अगर λ1 v1 प्लस λ2 v2 आ जाता है, ठीक है, इफ यू गेट λ1 v1, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको क्या बोलना है, यू हैव टू से दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन होमोजीनियस? आपको लिखना क्या है, जैसे आपके पास अगर λ1 v1 plus λ2 v2 everything you got right, you get back the equation, right? Okay, how to get back the equation मैं आपको बताऊंगा और आपको पता भी है, ठीक है। From system of linear equation you are able to write in terms of linear combination, right? You are able to express your system of linear equation as a linear combination of vectors, right? In the same manner if you have, अगर आपके पास linear combination given है, how to get back the system of linear equation, right? That is very important. And जैसे आपको ये आ जाता है non homogeneous system of linear equation, तो आपको क्या करना है, you have to write augmented matrix here, right? Write augmented matrix, okay, and perform suitable elimination, right? Perform suitable elimination. Okay, so these are some step by step procedure, okay? Suitable elimination, why? To so that you can reduce it to echelon form. And then if system has solution, right, if it has solution, right, if it has solution, okay, then the vector can be expressed as a, then yes, okay, then vector can be expressed as linear combination, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। तो इतना स्टेप करना पड़ेगा। देखो पहला जो फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया था, दोज वेक्टर वर वेरी सिंपल, राइट, दे आर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर, राइट, तो आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर्स दिए रहेंगे जहां यू विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट, ओके, वेदर यू कैन राइट देम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, राइट गिवन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ λ1 v1 प्लस λ2 v2 डॉट डॉट। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। तो मान लो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, the very first example I'm taking, okay, very first example, you can see example number 2, right? Suppose we have got x equal to 1 3 4, right, and there are some other vector like you can say v1 is given as 1 2 3, v2 is given as 0 1 2, right, 0 1 2, fine, and v3 is given as -1 0 1, right, ठीक है। Now the question is, can we express x as a linear combination of v1 v2 v3? That is the question. Can we express can we express x as a LC of linear combination of v1 v2 v3? ठीक है। अब देखो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्रेस दिस x as a linear combination of v1 v2, so write them as a linear combination λ1 v1 plus λ2 v2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको λ1 λ2 unknowns हैं, okay, remember λ1 λ2 λ3 are unknowns that you have to find, okay, that is why we will form we will write back the system of linear equation, then we will perform elimination, okay, and then we'll see whether solution exists or not, ठीक है। तो आपको ये समझना है, तो x यहाँ पर लिखो सबसे पहले 1 3 4, the very first step, okay, you can say λ1 times 1 2 3, λ2 times 0 1 2, okay, this is the first step that we are doing, λ3 times, okay,
minus 1 0 1. Okay, so we have written this as a lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3. X is, we are writing x as a linear combination of, okay, now these lambda 1 lambda 2 lambda 3, these are unknown, right? These are unknown, right? So there are three unknowns, right? There are three unknowns. Okay, so we'll get three equations here, right? समझ आए क्या? तो अब आप क्या करो इसको, you write them as a non-homogeneous system of linear equation, right? So instead of writing non-homogeneous डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के अलावा बजाय आप क्या करो, मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो, राइट? डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे? जो ये lambda 1 lambda 2 lambda 3 है, you can consider them as a unknown, right? So these guys are unknown, right? Lambda 1 lambda 2 lambda 3, these are unknown. You can say unknown of the system of linear equation, and these are the column vector 1, column vector 2, column vector 3. और इसको आप मान सकते हो it's a B matrix, a B matrix, okay? It's a B matrix, right? Okay, you can say B matrix. Right hand side is given ना, तो आपको पता होना चाहिए जैसे AX equal to V. This is the non-homogeneous system of linear equation. So what we can do here is we can directly form A given B, A given B matrix. What is A? A is nothing but, ठीक है, आप डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, राइट? A क्या है आपका? A is a column. A will be, you know, how can you make A matrix? तो आप पहला कॉलम ले लो 1 2 3, ठीक है? तो आप यहाँ लिखो 1 2 3, राइट? फिर क्या लिखो 0 1 2 0 1 2, right? And then you come to minus 1 0 1, right? So minus 1 0 1. And यहाँ पर B matrix is nothing but a, you know, this B vector is nothing but the right hand side, that is, you know, X. आपको ये वाला वेक्टर लिख देना है. X we are considering as B, okay? 1 3 4, 1 3 4. और आपका जो अननोन है, what are they? They are lambda 1 lambda 2 lambda 3. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको आता है सॉल्व करना, उसके लिए फिर ये सब सिंपल है, इसीलिए मैंने उसमें ज्यादा टाइम दिया था. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करते आना चाहिए, राइट? एंड द पावरफुल टूल दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इज द, you know, elimination, performing elimination using those elementary operations, right? अब इसमें क्या करना है, इसमें आप सीधा सीधा एलिमिनेशन परफॉर्म करो बस. तो आप इसको पिवट ले लो, पहला पिवट, राइट? तो आप यहाँ पर लिख दो R2 में हम लगाएंगे रो ऑपरेशन, सो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, एंड R3 में लगाएंगे तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, राइट? सो हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा कुछ ऐसा आएगा 1 0 minus 1, and this is the augmented matrix that we have got. 0, ये कितना हो जाएगा? ये 1 ही रहेगा, because 1 minus 0 is 1, right? And this is going to be you know, minus 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, right? So I think this will be 2, right? And यहाँ पर आ जाएगा 1. I believe this is fine. Now you can multiply 3 here, so this will be 0. See why we are writing like this, आपको पता होना चाहिए. We are now performing elimination. Elimination कैसे परफॉर्म करते हैं? शिवम, आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स? आपको समझ आ रहा है ना ये क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, राइट? तो सिस्टमैटिक अप्रोच से फॉलो करना है, ठीक है? तो 1 0 minus 1 3 1 2 1 0, राइट? ऑल दीज थिंग्स. अब देखो ये 0 हो गया, पहले एलिमेंट को पिवट ले लिया, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट जितने भी हैं पिवट के नीचे, वी हैव टू मेक देम 0, ठीक है? सारे को, हाँ, परफेक्ट. तो अब देखो यहाँ पर what is going to happen here is, you know, यहाँ पर लिख सकते हो this is going to be 2 only, right? Because this guy is 0, right? Now you see this is you know, multiply 3, so 1 plus 3, that is 4, ठीक है? और यहाँ 3 से करेंगे तो this will be 1. I believe this is fine, ठीक है? Okay. So this is I think everybody can get, okay? If you multiply by 3 here, okay, 3 and 4 minus 3 is 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 1 1, right? 1 1 1.
तो so this is 0, this is 2, yeah, this is 4. Yes, perfect. So we have got all these things. Now let us go ahead. Okay, let us go ahead and check. Okay, let us take this as a pivot variable, right? So now we will perform on R3. R3 is R3 minus 2 times of R2, right? बस तो आप नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा आपको यहाँ लिखना है, दिस इज 1 0 माइनस 1 0 1 2 एंड यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, राइट। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। और आप देखोगे 1 1 और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, बट इफ यू मल्टीप्लाई हियर, इफ यू मल्टीप्लाई हियर तो 2 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो Shivam, can you comment on this echelon form? You know, is it consistent? Can we have the solution if you look at this echelon form जो हम लोग elimination के through obtain किए हैं? अब देखोगे right column has a pivot here, okay, and if you see the rank of the matrix A and rank of the matrix augmented matrix, तो यहाँ पर दो, you know, you see here there are two pivots and there is one more pivot in the right side, right, okay. So it is not consistent, right? Rank of A is not equal to rank of B, or you can say a right column has a pivot, right? No column has a solution. If no column has a solution, I mean, no, not no column, no, I mean, it has no solution, you should say, right? So if it does not have any solution, means you cannot find lambda 1, lambda 2, lambda 3, right? So lambda 2, lambda 3, lambda, okay. So here you can say that no solution, right? In this case, it is not consistent. If it is not consistent, then what you can say? No solution. What is the meaning of no solution? No solution means you have to always say that lambda 1, lambda 1 to, you can say lambda 3. Okay, lambda 1, lambda 2, lambda 3 does not exist. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 does not exist. Right? You can't determine lambda 1, lambda 2, lambda 3. Means what? Can you write X as a linear combination of V1, V2, V3? No. आप क्या बोलोगे? What is the conclusion here? The conclusion will be the conclusion after solving will be what? X cannot be expressed as LC of V1, V2, V3. ठीक है? Understood this? तो देखो, vector will be given and V1, V2, V3 is given, right? And in the options you will see, अगर ऑप्शन में कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है, राइट? यस यस यस, आप देखोगे आगे, आगे चल के देखोगे, राइट? कैसे? आई थिंक आप सोल्यूशन देखे होंगे, राइट? इनफाइनाइटली मैनी केस में हाउ वी एक्सप्रेस दी, यू नो, सो विल सी दैट। अभी देखते हैं क्या होता है, राइट? अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, राइट? तो विल सी व्हाट वेदर वी कैन राइट और नॉट, राइट? जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन आएगा, उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट अगर करता है, दैट यू हैव टू एंश्योर, राइट? अब दीज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 वैल्यू शुड बी यूनिक ओनली ना, ठीक है? तो लेट अस सी वेदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो एक एग्जांपल हमें लेना है, दैट एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन, एंड दैट टू वाज आस्क्ड बाय आईआईसी बैंगलोर, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? okay.
So Shivam, we will see that, okay, in a while. Let us solve one PYQ so that you can understand everything. So GATE 2016, okay, ISC Bangalore, ISC Bangalore, ठीक है. ये क्वेश्चन जो आया था ISC बैंगलोर ने पूछा था, एंड सर्टेनली दिस ईयर आल्सो दे माइट आस्क क्वेश्चंस. So whenever ISC conduct the exam, they ask very good questions, right? तो इसमें क्या दिया हुआ है? If a vector E1, okay, if the vectors E1 is given as 1 0 2, okay, E2 is given as 0 1 0, okay, and E3 is given as, okay, they are not the standard basic vector, remember, minus 2 0 and 1. These are the elementary vector they have given, E1 E2 E3, okay. Okay, what they are saying is they form, okay, they form an orthonormal basis and orthogonal, you can say orthogonal basis, okay, of the three-dimensional real space of the three-dimensional real space, and we will write here R3. This is a vector space R3, three-dimensional vector space R3, right? Then see, if you do not understand what is the meaning of this orthogonal basis, please wait. बेसिस का मतलब मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज थ्री वेक्टर. यू अंडरस्टैंड दैट these three vectors belong to R3, okay, and they are three dimensional vectors, okay. These E1 E2 E3 belongs to the real space R3, right? Then the vector U, okay, then the vector U equal to 4 3 minus 1, okay, that belongs to the real space R3 only, right? R3, okay, can be expressed as अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट, कि U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E1 E2 E3 और नॉट, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? you have to write U as a linear combination of E1 E2 E3, right? तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है आप ऑप्शन देख लो, ओके, बाद उसके बाद आप स्टार्ट करो सॉल्व करना. देखो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? u इज गिवन एज -2/5 E1 -3 E2 -11/5 E3, right? Option B is given as u equal to -2/5 E1 -3 E2 plus 11/5 E3. Option C is given as, okay, E1 plus 3 E2 plus 11/5 E3. Option D is u equal to -2/5 E1 plus 3 E2 minus 11/5 E3, ठीक है. So whether you can do from option to question या कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व करो, राइट? आप ऑप्शन से क्वेश्चन में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लेमडा वन लेमडा, देखो ये क्या है? u इज व्हाट? u इज रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर E1 E2 E3. अब उसमें लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री आपको नहीं दिया हुआ है, दैट यू हैव टू डिटरमाइन. आपको ये क्वेश्चन समझ आया क्या शिवम? यू हैव टू एक्सप्रेस, तो ऑप्शन देखकर आप समझ सकते हो, राइट? तो आप लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री की वैल्यू यहाँ चार ऑप्शन में दी हुई है, यू हैव टू टेक इट, राइट? पहला है, आप देख सकते हो, राइट, लेमडा वन की वैल्यू -2/5, लेमडा टू की वैल्यू -3, लेमडा फोर की वैल्यू, लेमडा थ्री की वैल्यू -11/5. देन आप उसमें लिखो और जल्दी से चेक कर सकते हो, राइट? मेरा सजेशन तो वही रहेगा, आप क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस में u has been expressed as a linear combination of given vectors, right?
Okay, so solution exists. You don't have to check whether solution exists or not, right? Okay, you don't have to check whether solution exists or not. Your solution will exist here. ठीक है? Okay, and that too you will get unique solution because lambda 1, lambda 2, lambda 3 should be unique, right? तो इस केस में आपको हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है ना? यूनिक सोल्यूशन, राइट? तो जब बैलेंस केस रहेगा तो ठीक है, चलो। तो व्हाट वी कैन डू, देखो एक ऑप्शन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो आपका जो u वेक्टर है, राइट, u वेक्टर इज व्हाट? u वेक्टर इज 4 3, okay, and -3, okay, that belong to R3 is equal to lambda 1 e1. E1 is nothing but 1 0 2 plus lambda 2 is nothing but 0 1 0, okay. Lambda 3 is nothing but what? -2 0 1, ठीक है। तो आपके पास ये सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, राइट? ओके, so what I'll say is you can directly write augmented matrix and find, apply elimination, get back the lambda 1 lambda 2 lambda 3। ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आप lambda 1 lambda 2 lambda 3 आप ऑप्शन से ले लो, ठीक है। आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से आप you guys can always take, यहाँ से आप देखोगे lambda 1 -2/5, राइट, -3 -11/5, इनको पुट करोगे यहाँ पर, राइट? So I'll not suggest go for option to question. What do you do? Directly you write here, इसको लिख सकते हो 1 0 2, राइट? ये पहला कॉलम वेक्टर है, 0 1 0 एंड -2 0 1, और यहाँ पर आप 4 3 -3, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो, ये a given b आप बोल सकते हो, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट यू हैव गॉट, ठीक है। क्योंकि आपको एलिमिनेशन लगाना है, देन यू हैव टू गो फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन, राइट? सो अब दिस इज द पिवट, ओके, सो ऑलरेडी दिस गाय इज 0, सो यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग हियर। आप इसको मेक कर सकते हो, यू कैन मेक इट 0, राइट? सो R3 में क्या करेंगे, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1, राइट? सो नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स आने वाला है दैट इज 1 0 -2 0 1 0, and this is 0, this is 0, and this is going to be 2 times of that, so 4 1 plus 4, that is 5, right? 1 plus 4, so this is nothing but 4 3 minus sorry, so if you multiply by 2, so it becomes 8, and I think this is -11, right? It's a very easy process। अब आपको कुछ नहीं करना, you don't have to apply any kind of, this is the echelon form only you got, okay? So you see here, इसको देख, एक ही बार only one operation that you have to perform, तो बेटर ये मेथड ज्यादा अच्छा है, राइट? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पिवट हो गया, एक पिवट ये हो गया, एक पिवट ये हो गया, मतलब आप समझ सकते हो कि सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, राइट? सोल्यूशन विल एग्जिस्ट बिकॉज ईच कॉलम हैज अ पिवट, ठीक है? ईच कॉलम हैज अ पिवट, सोल्यूशन डज एग्जिस्ट, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि लैम्डा, अब यहाँ कैसे निकालते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू, आपको पता होनी चाहिए, राइट? हाउ टू अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। आप इसको कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी दिस मैट्रिक्स रिड्यूस्ड जो आपको एक्लॉन फॉर्म में आई है, राइट? जस्ट ओके, जस्ट यू फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है? अब आपको जैसे मैट्रिक्स आ गई, राइट? तो आप क्या करो, इसको जस्ट यू फॉरगेट दीज थिंग्स, राइट? आप क्या करो, यहाँ पर यू जस्ट राइट हियर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, राइट? और राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हो ना, ये 4 3 -11, राइट? 4 3 -11। अब हाउ फास्ट यू कैन अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। 4 3 -11, अब देखो यहाँ से आ गया 5 lambda 3 इक्वल टू -11, राइट? सो व्हाट इज lambda 3? lambda 3 इज -11/5, तो ये तो पहला आ गया हमारा डायरेक्ट यहाँ से, राइट? अब आप इधर जाओगे तो यहाँ से lambda 2 आ रहा है, lambda 2 कितना आ रहा है, क्लियरली इट इज विजिबल, lambda 2 इज इक्वल टू 3, lambda 2 आपका
कितना आ रहा है? I think everybody can relate this. Okay, lambda 2 is 3, and further if you go, lambda 1 minus 2 lambda 3 equal to 4, right? Okay, so lambda 1 is going to be 4 plus 2 lambda 3, right? Lambda 1 is going to be 4 plus 2 into lambda 3 is minus 11 by 5, which is 20 minus 22 by 5 is minus 2 by 5. Okay, so I think you got here lambda 1, lambda. Okay, so lambda 1 is negative. Okay, lambda 2 should be positive, right? So let me see now the options. This is wrong. Lambda 3 should be negative. This is wrong. Okay, now this is also wrong because here the lambda 2 is negative. Okay, so option D is correct. Option D is correct. So have you understood this question? कितना fast कर सकते हैं अगर आपको systematic approach पता है तो. See, if you don't know the systematic approach, then it takes a lot of time. Okay, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे solve करना है इस question को, right? So it's a dynamic approach. I mean, it's a amazing approach that I have found, right, for you people. तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, मैंने बताया था. Only one concept that you have to keep in mind: how to solve system of linear equation, and that is the central objective of linear algebra that I have stated, okay, in the beginning as well. ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, राइट? नो कंफ्यूजन शुड बी देयर, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड एलिमिनेशन, राइट? ओके, जैसे मान लो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको एलिमिनेट करते जाओ. आई ऑलवेज फेस मेनी चैलेंजेस इन द डोमेस्टिक, ओके, एट होम एंड मेनी प्रॉब्लम, बट आई ऑलवेज एलिमिनेट देम. जैसे मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करता हूँ, राइट? ओके, आपको समझना है एंड कीप गोइंग अहेड, राइट? चलो, ये कॉन्सेप्ट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? एंड विद दिस आपका जो क्वेश्चन था, सर इनफाइनाइटली सोल्यूशन में लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिखना है तो वहां पर lambda 1, lambda 2, lambda 3, those values should be what? Those values should be unique, right? lambda 1, lambda 2, lambda 3, right? एग्जिस्ट करना चाहिए, सोल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सोल्यूशन आपको डिसाइड करना है कि वेदर, है ना? अब जैसे ऑप्शंस में यहाँ पर lambda 1, lambda 2, lambda 3 की वैल्यूज हैं, मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट? तो आपको वहां चेक तो करना नहीं था वेदर सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट. ओके, आई होप दिस मेक सेंस टू यू, राइट? तो ये आपको याद रखना है. एंड let us talk about linear independence, right, of the vector. What is the meaning of linear independence of the vector? क्योंकि अगर आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन गो अहेड, राइट? ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, राइट? तो याद रखना, जब भी मान लो कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, राइट? you can say some matrix are given, right? You can say A B C D E F G H I, okay, you can say I, okay, and this is x1 x2 x3, right? You can say this is nothing but v1 v2 v3. Now the question is, this is nothing but what? Ax equal to b. Now I'll ask whether the solution will exist or not. Solution exist करता है कि नहीं करता? Solution exist करता है, it means you can always express this b. You can always express this b, v1 v2 v3. okay, अभी तक आपको कैसे लोग पढ़ाते थे? लोग बोलते थे कि अच्छा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कैन यू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैन यू फाइंड दीज अननोन्स x1 x2 x3. अब मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपसे, मैं पूछूंगा कैन वी राइट दिस b1 b2 b3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कैन वी एक्सप्रेस दिस b1 b2 b3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ A. अब देखोगे b1 b2 b3 is nothing but what? b1 times b1 b2 b3, so b1 times this, right? b2 times this, b3 times this, okay? Or what you can do here is you can say that x1 times here, not b1, x1 times a b c
And these x1, x2, x3 are unknown. These b1, b2, b3 you know already, right? So you have to write what? x1 times, right? In case of matrices, because whatever is unknown क्या है यहाँ पर? Lambdas. Lambda you can say is here the x1, x2, x3, right? These are unknowns. x2 times this column vector, second column vector you can say, right? D, E, F, and x3 times x1, x2, sorry, G, H, I. So if you are able to write the right hand side B as a linear combination of column vector of A, it means solution does exist, right? Solution does exist. Okay. So now I'll talk about linear independence of vector. The question of linear independence. Question of linear independence. Okay. It is a very important question. Independence of vector. This year many students of mine, they went to IITs and ISC for their interviews, right? So based on their feedback, so they have been talking about, sir, for next 45 minutes the complete interview was on linear algebra, and they attended my sessions. So they said that I performed really amazing, right? Question अगर आपसे पूछते हैं what is the meaning of linear independence of a vector, right? So they amazingly answered. क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर आप सिंपली जानते हो कि रैंक कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट करके रैंक निकाल लिया, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट? अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, वेक्टर इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, देन इट इज ऑफ नो यूज, राइट? गेट में मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने अभी सॉल्व किया आईआईसी बैंगलोर का, तो हवा नहीं लगने वाली है. मुझे तो हवा नहीं लगती थी. आई डोंट नो वेदर दैट द हवा विल बी विथ यू और नॉट, राइट? समझ में आया क्या? तो ये समझना है. ओके, सो लीनियर मुझे तो समझ नहीं आता था व्हेन आई वाज appearing in the examinations and when I used to see these kind of questions. तो मुझे तो समझ, क्योंकि from where I attended sessions I was not taught these things, right? Fine. So question of linear independence of a vector. Okay, what is the meaning of this that we have to understand, right? इसको समझना है हम लोगों को. क्वेश्चन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? वी विल टेक टू वेक्टर्स, राइट? देखो, जैसे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लीनियर आइगन वेक्टर्स, राइट? तो हम लोगों ने दो वेक्टर लिया था और एक मैट्रिक्स लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और वी गॉट टू सी कि जो मैट्रिक्स, जो वेक्टर ax इक्वल टू लैम्डा x को सेटिस्फाई करता है, दैट इज गोना बी द आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, राइट? इसमें भी हम दो वेक्टर को लेने वाले हैं. मान लो एक वेक्टर आपका x दिया हुआ है, दैट इज 1 and 2, और कोई दूसरा वेक्टर y दिया हुआ है, दैट इज 3 and 6. देयर आर टू वेक्टर्स. एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर और ले लो, x दिया हुआ है. यू कैन से वन मोर वेक्टर, यू टेक x इक्वल टू 1 and 2 and y इक्वल टू 1 and -1. ये आप दो वेक्टर ले लो पहले, ठीक है? यू टेक टू वेक्टर्स टू अंडरस्टैंड. तो अब देखोगे यहाँ पर कि x और y में क्या रिलेशन है. आप देख सकते हो x एंड y को आप कैसे, कैन यू राइट y एज अ y इन टर्म्स ऑफ x, सो यू कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x, आई थिंक. या देखो x यहाँ पर क्या है, 1 and 2 है. और अगर आप y में देखोगे, इफ यू टेक 3 कॉमन, राइट, फ्रॉम y, इफ यू टेक 3 कॉमन, राइट, इन y, so you can write this as 1 and 2. So what is this? This is nothing but x, right? So you are able to write this by in terms of x, scalar times x. Okay, you are able to write by in terms of x. ठीक है? यहाँ पर समझ आया क्या शिवम? This point, see, you have got two vectors. One vector is 1 and 2, right? And another vector is by, that is 3, 1 and 2, right? I mean 3, 6, right? You are able to express this by in terms of x. ठीक है?
yes, okay. देखो x vector is given, that is 1 and 2, y is given, that is 3 and 6. So if you see this y, if you take 3 common from y, right, अगर आप 3 बाहर लेते हो, so it becomes what, 3 times of 1 and 2. And what is this 1 and 2? 1 and 2 is nothing but x. So you are able to write y in terms of x. ठीक है, आप y को x के उसमें लिख सकते हो, right, in terms of x. And y is nothing but what, scalar times the vector x. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि y को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो. ओके, दिस इज वन स्टोरी, राइट, ये आपको समझना है. अब यहाँ पर देखो, एनीथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू, राइट, एनीथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू गाइस. ओके, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हो. ओके, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x. अगर कोई भी वेक्टर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, okay, so they are not linearly independent vector, they are linearly dependent vector. Okay, they are linearly dependent vector. Okay, please remember this, please remember this. Okay, here you see x and y, they are not proportional to each other, they are independent, right, we will call it independent. Okay, तो आप क्या बोलोगे, आप हमेशा याद रखना, how can you can express this lambda 1 x plus lambda 2 y. Okay, you can write them as a linear combination of x and y. Okay, आप हमेशा कैसे लिखोगे, देखो x and y वेक्टर दिया हुआ है, you write them as a linear combination, lambda 1 x plus lambda 2 y. Okay, and that should be equal to 0, that should be equal to 0 if and only if and only if, okay, lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0, right. ये कब, when it is going to be equal to 0, okay, this linear combination should be equal to 0. Okay, कब, when it is possible, when lambda 1 lambda 2 equal to 0, क्योंकि x and y are नॉन जीरो वेक्टर्स. ठीक है, जब lambda 1 lambda 2 मतलब there is nothing common in between, right. अगर lambda 1 lambda 2 are not equal to 0, remember, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, this is not 0, right, here some scalar is there. If there is scalar which is non-zero, so you can say that these vectors, okay, like x and y are linearly dependent, linearly dependent vectors. Linearly dependent vectors. Okay, but in this case, you see, in this case x, y, okay, they are linearly independent, linearly independent. Okay, so let me further take this. Okay, so lambda 1 x plus lambda 2 y equal to 0, right. So you can say that this is only true if and only if lambda 1 lambda 2 equal to 0, right. So in case of linear independence of a vector, lambda 1 lambda 2 should be equal to 0, right, then only you can say the linear combination will be coming out to be 0, right. अब याद रखना, जब वेक्टर दो दिए हैं, if you have to check whether they are linearly independent, right, so first of all nothing should be common in between, right, so that common term, common like scalar constant should not come, right, or you can say that if you write them as a linear combination, so that should be equal to 0, and only one condition is there, when lambda 1 lambda 2 should be equal to 0. ठीक है, because x and y are non zero ना, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, you can say that lambda 1 x equal to minus lambda 2 y, right. तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि x is what, x is nothing but minus lambda 2 upon lambda 1, okay, lambda 2 upon lambda 1 y. ठीक है, तो याद रखना, if lambda 1 equal to 0, then it is not equal, it is not equal, please remember this. If you take lambda 1 equal to 0, अगर lambda 1 equal to यहाँ पर 0 लेते हो, तो it is not equal, please remember, right. So lambda 1 should be equal to 0, so you are not able to express this x in terms of y. ठीक है, if you are not able to express x or y in terms of each other, मतलब that is the linear combination of the linear combination of vector will be equal to, you can say it, you know, lambda 1 will be 0 and they are linearly independent vectors. ठीक है,
यहाँ लेमडा वन जीरो क्यों नहीं होगा? लेमडा वन जीरो अगर अगर सॉरी लेमडा वन अगर जीरो है मतलब दिस एक्स डज नॉट इक्वल टू दिस, ओके, बिकॉज लेमडा वन नीचे अगर जीरो लिखते हो राइट, तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम एज वेल राइट। तो आपको याद रखना है कि इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, दीज आर द वेक्टर्स, ओके, so they are linearly independent, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, दैट डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो लेट definition, let capital V be a vector space। देखो वेक्टर स्पेस हमें लेना है क्योंकि इसी वेक्टर स्पेस में बहुत सारे बंच ऑफ वेक्टर्स रहेंगे। लेट V be a vector space where v1 v2 dot dot vn, क्या v1 v2 dot 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 vn, there are bunch of vectors, okay, of you can say V is said to be Li linearly independent vectors if and only if lambda 1 v1 plus lambda 2 v2, their linear combination, right, their linear combination should be equal to 0, okay. And when it is true, if and only if and only if, okay, lambda 1 lambda 2 equal to lambda 1 equal to 0, right, ठीक है, if their linear combination is going to be 0, समझ आया क्या? If their linear combination is going to be 0, and when linear combination will be 0, keep in mind when lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0, right? These scalar values should be equal to 0. So you can say that these lambda I are nothing but scalars, and these lambda I should be 0. अगर lambda I is not equal to 0, it means they are not linearly independent, right? Okay. So अब ये definition है, it's fine, right, but for gate examination, right, or for solving any problem, you need some systematic approach of investigating Li and Ld, ठीक है। तो हम आपको अब systematic approach बताएंगे, ठीक है। I will talk about systematic approach of Li and Ld, right, okay, systematic approach of Li and Ld। तो systematic way of investigating, okay, Li and Ld। सिस्टमैटिक अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, और सिस्टमैटिक अप्रोच अगर आती है देन योर लाइफ इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ जाओ, दो वेक्टर अगर दिए हैं तो इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स मींस दैट स्केलर वैल्यू विल नॉट बी जीरो, राइट, सम नॉन जीरो वैल्यू, तो दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। और रैंक में आप बताते हो, जैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आप बताते हो 2, तो वहां पर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स रहेंगे, दैट यू कैन डिसाइड, राइट, देयर विल बी 2, ओके। सो रैंक इन टर्म्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी विल एक्सप्रेस, ठीक है। आप देखना रैंक की डेफिनेशन और एक आ जाएगी आफ्टर लर्निंग दिस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू यू हैव बीन गिवन, सबसे पहले आपको गिवन रहेगा, राइट। फर्स्ट स्टेप इज लाइक लेट v1 v2 and dot 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 vn, okay, be n column vectors, right, these are the n column vectors, okay। सबसे पहले आपको n column vectors दिया रहेगा। सेकंड में आपको क्या करना है, you have to construct a matrix, you can say you have to construct a matrix capital R, you have to construct a matrix, you can say capital R, ठीक है। आप एक मैट्रिक्स कैपिटल आर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ओके, दैट मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट v1 v2 एंड सो ऑन vn। तो आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जस्ट पुट ऑल दीज वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स, ओके, बिकॉज आपको पता है मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स लाइक v1 v2 vn, राइट। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, देन आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पिवट्स वेरिएबल, राइट। एंड थर्ड इज, आप पिवट वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, यू हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन, सिंपल सा मैथ तरीका है,
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल, फाइंड द नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फाइंड द नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल मींस फाइंडिंग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको मेथड पता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने की, राइट। एलिमिनेशन लगा के ही निकालना है, जल्दी आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पिवट्स वेरिएबल, और यू कैन से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, ओके, रिमेंबर। सो व्हेन दे विल बी एलाई, ओके, व्हेन दे विल बी एलाई, याद रखना। मान लो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ पिवट, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू अननोन के बराबर है। ओके, यू कैन से इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ओके, देन दिस इज फर्स्ट, देन vectors are Li vectors, right? Okay, what is the meaning of that? मान लो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, यस। लेकिन एलसी में हम लोग या मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी यही, यहाँ पर भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक यू हैव टू मेक श्योर, मान लो मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करते हो, इफ दैट मैट्रिक्स इज उसमें तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, इसमें बस चेक करना है, राइट। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देन वेक्टर्स आर एलाई, ठीक है। अगर मान लो रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर आते हैं और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अगर डिटर्मिनेंट 0 है मतलब रैंक उससे कम होगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब आप डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हो, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब वो एलाई वेक्टर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और बी में क्या रहेगा कि अगर मान लो नंबर ऑफ पिवट्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इज लेस देन number of unknown. I'm talking about rank of the matrix R, right? Rank of the matrix R. Okay. तो इस केस में क्या रहेगा, then vectors are LD. Vectors are LD. इसके केस में आप और you can say that if determinant is equal to 0, तो आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ केस आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस आता है, राइट। और इफ देखो, इफ फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट, इफ फ्री वेरिएबल exist means the vectors are LD vectors, remember always। अगर मान लो मैट्रिक्स में फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, फ्री वेरिएबल कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस आएगा, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और एक से नंबर ऑफ, इफ ईच कॉलम डज नॉट हैव अ पिवट मतलब फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। क्वेश्चन क्या आया है, जैसे मान लो द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, ये क्वेश्चन 2015 में आया था गेट, इन 2015 गेट। तो सी व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएंगे, डोंट वरी, राइट। कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 वेक्टर्स, राइट। एक वेक्टर आपका दिया है 1 2 1, दूसरा वेक्टर आपका दिया है x 6x, एंड तीसरा वेक्टर आपका दिया है
3 4 2, right, is linearly dependent, they have said. Dependent when x is equal to So they have clearly mentioned that these three vectors are linearly dependent vectors. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो ये बता दिए हैं कि these vectors are linearly dependent vectors, it means free variable will exist. It means determinant will be equal to 0. क्योंकि आप देख सकते हो ये, if you construct a matrix here, x 6 x 3 4 2, okay, it's a 3 by 3 matrix. Okay, तो आप इसका det निकाल सकते हो, इसका det निकालो 1 2 1 x 6 x and 3 4 2, and that should be equal to 0, right? समझ आया क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ यू आर गेटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, so you can say that free variable will be there or this will be equal to 0. अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपका यहाँ 0 1 2 and 3, 0 1 2 3, right? These are the options given. If you solve this, you will get option D, right? You can expand this, right? So I'm just going to expand here, right? So 1 times, this is 12 minus 4x minus x, so 4 minus 4, ये तो 0 हो जाएगा, plus 3 times 2x minus 6 equal to 0. So if you solve this, you will get x equal to 3. तो अगर एग्जाम में clearly question में mention है that is linearly dependent, right? So it's a very simple concept, right? And they are asking some unknown, right? X is present here, which is not known element in the matrix. ठीक है, तो जैसे ही आपके पास वेक्टर गिवन रहेगा, you construct a matrix. Okay, this matrix is nothing but R matrix you can take, or any matrix, M matrix, A matrix, whatever. So ठीक है, we'll meet in the next session. We will understand more concept based on LI and LD, right? और सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हमें डिस्कस करना है लीनियर स्पैन. I hope we will finish spanning set as well, and we'll talk about basis, we'll talk about dimension. यही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बस, ठीक है, आपके वेक्टर स्पेस के अंदर सारे के सारे. तो शिवम इज सेइंग कैलकुलस मेरे बहुत ही ज्यादा वीक है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा. Yes, Shivam, just wait and watch. The way I'm simplifying your life in case of linear algebra, the same way I'm going to simplify your life in probability and statistics, as well as in calculus, as well as in optimization. So just wait and watch, right? Okay. So, okay. I hope if you have any sort of doubt, please let me know. Otherwise, we'll wind up the session here. Yes. Thank you.